Hello students, this is a first problem session of our series. In this video, we will discuss some problems related to distance formula. Okay? So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको इस दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है. तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, पकड़ लीजिए. हमने यहाँ पे नाम दे दिया. यहाँ पे इसका a है आपका 1 3, b है आपका -5 2. ओके, देन आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 करके आप इसको मार्क कर सकते हैं पॉइंट को. जैसे ये वाला हो गया x1, ये वाला हो गया x2, ये वाला हो गया सॉरी x1 y1 x2 y2. ओके, सो इन दैट वे वी कैन मार्क इट. उसके बाद जो डिस्टेंस है ए बी में हम लोग फॉर्मूला में उसको बिठाएंगे. सो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इसमें हम लोग फिर जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट करेंगे. हिसाब करने के बाद जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. ओके, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स. ओके, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो इन दोनों पॉइंट से ये वाला हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल डिस्टेंस में है. ओके, सो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और क्या है वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी को लेंगे. जस्ट उसको मार्क करना है वो राइटिंग के सिंप्लिसिटी के लिए. ओके, सो दिस इज आवर लाइन. जो हमारा जो गिवन पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है. तो हम लोग लेंगे लेट पी ए बी ए पॉइंट. वो जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उसको हमने पकड़ा है ए कोमा बी. सो एक्स कोऑर्डिनेट इज ए एंड वाई कोऑर्डिनेट इज बी. तो एज दिस पी satisfies equation 1, so I can write a plus b equal to 4. Okay, this is fine. Now what is the other condition, that PA and PB both are same. So if PA and PB are same, then this is a natural implication that PA square equal to PB square. So sorry, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को बिठाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला के वैल्यू से पी ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 होल स्क्वायर एंड पी बी में ए माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 होल स्क्वायर. ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट दिस इक्वेशन. आप इसको आराम से लिख के आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, कोई बात नहीं. वीडियो को थोड़ा सा स्लो रन करेंगे तो आपको ये पूरा आप लिख पाएंगे, पॉज करके भी लिख सकते हैं. So on simplifying we get this equation. On solving this 2, that is 2 and 3 combined, we get a equal to 3 and b equal to 1. Okay, so the required point is 3 comma 1. So the coordinate 3 comma 1 is equidistant from both a and b, and at the same time it lies on the line 2. Okay, next determine if the points 1 comma 5 and 2 comma 3 and minus 2 comma minus 11 are collinear. तो collinear हम मतलब क्या है, इफ आई मार्क दिस पॉइंट बाय ए बी एंड सी, तो क्या है ए बी एंड सी ऑल आर ऑन द सेम लाइन. ओके, सो उसको निकालने का तरीका है, आप तीनों का डिस्टेंस निकालिए, ए बी बी सी एंड ए सी. तीनों का निकालने के बाद अगर किसी भी दो को प्लस करके तीसरा आता है, इफ सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, ओके, एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, कोई भी पेयर उसको सेटिस्फाई करे, कोई इशू नहीं है. बट इफ दैट हैपन्स देन दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी करने से वो ए सी से ज़्यादा हो रहा है. ओके, एंड सेम गोज विद अदर two pairs. Therefore ABC are not collinear. Okay,
Okay, so ABC are not collinear. Number 4, find the point on y-axis which is equidistant from these 2 points. Okay, तो y-axis का point क्या होगा 0, y. So this is obviously visible. Okay, this is y-axis. यहाँ पे आप एक point लेंगे तो that point will be 0, y. Okay, so this is why we consider this point 0, y be a point. Now according to the condition, this point P is equidistant from both A and B. These are your A and B. Okay, so it is obviously this implies PA square equal to PB square. Now if you simplify, you get y equal to 11 by 8. So this is the required point. Okay, this is how you solve this equation. You simply put the values in the distance formula and compute the value of y or the missing. If it may be x also, no problem. Okay, this is the last problem. So here we have to find the value of y. Okay, for which the distance between P and Q, means distance between P and Q is nothing but 10. So we have to find the value of this y, for which the distance is 10. So PQ is 10, so PQ square is 100. So simply putting the distance formula here and simplifying, this is a very simple calculation. You can pause the video and write it down on a paper. We get two values of y. So these are the two values of y. So for these two values we got two coordinates. So it is clear that the distance between, if Q is here, suppose P is here, then distance between this and this is always 10. Okay, so these are the two coordinates. Here you can write it as 10 comma, this is actually not y-axis, sorry, it is not mandatory. Let me cover it down. Suppose this is not the case. Okay, this is your y-axis and these are the points. This 10 comma 3, this point, and this is your 10 comma minus 9. Okay, so these are the 2 points from which P is at a distance 10. So these are the questions. You can try it in your home. घर पे इसको ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. ओके, आपको एनसीईआरटी बुक में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. उसके अलावा अगर आपके पास बी दाश अवेलेबल है तो उसमें भी मिल जाएंगे. इसके अलावा कोई भी बेसिक ज्योमेट्री की बुक आप ले सकते हैं. एसएल लोनी को लीजिए. ओके, सो ये सब बुक में आपको डिस्टेंस फार्मूला की बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे. यू कैन ट्राई इट. बेटर है आप अगर एनसीईआरटी से ट्राई करें, वो सिंपल भी है और समझने के लिए भी अच्छा है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. ओके, थैंक यू सो मच.